Genesis chapter 39. Not the entire chapter, just I will take one verse and then I will move forward. Come with me, everyone else. Genesis 39 and verse 12. As we know the beautiful life of Joseph, that how beautiful Lord has chosen him when he was such a tender age, at the age of 17. And when he has chosen, he has a plan. God has a plan for his life, and Lord has anointed him. Lord has prepared him, and for that preparation and anointing, he gave him the dreams. Hallelujah. 2 beautiful dreams God gave to him, and that dream really carries his future. That dream really carries the will and the plan of God for his life, which we all know it very well. हम सबको अच्छी तरह से मालूम है, परंतु उसकी यात्रा में we have learned so many things that a righteous man, I tell you, my beloved, when you are righteous, then your eyes are anointed and blessed. Then only you can see the dreams and the plans and the future of the heaven. Hallelujah. And Lord will reveal it to you. When you're a righteous person, then only you are such a person. You have tremendous of patience, long suffering, and you will always be quiet. You will never murmur. You will never put allegation to anyone else, even if you know that you are right. आपको ये भी मालूम है आप सत्य हैं, आप सही हैं, करेक्ट हैं, but this is the character of a righteous person that we have also learned what the character Joseph was carrying. But something today I will talk to you and which will really bless you supernaturally. I give the glory to Jesus, to my Holy Spirit of God, that He has given tremendous treasure that I must share to you tonight. So let us come with me. I will take you Genesis 39 and verse 12. I will read it for you. You just mark certain word which I'm going to explain it right now to you. The scripture says, she caught him by his garment, underline word garment. Saying, lie with me. Garment, you may say the cloth which has covered the body of Joseph, that is cloak also, or the robe also, you may say that. It is the entire meaning is the same. But he left his garment, underline, in her hand and fled, get out of the house. You have only underlined the word kapda, jo uska vastra hai. Garment, just underline it. I believe you all have underlined it. We are talking about today on the garment. अब एक यहाँ पे प्रश्न होता है, a question arises. Very carefully, minutely, open up your ears and listen it. Now question come here, that why the wife of Potiphar tried to grab his cloth? Why? Number 1. Number 2, why Joseph left his cloth there and he fled. He did not care for anything else. Hallelujah. This is the beautiful character of a righteous person. Do you know one thing, my beloved? Righteous man, whosoever is a righteous person, जो भी धर्मी है, उसके शरीर का वस्त्र भी अभिषिक्त होता है. उसके वस्त्र में कुछ ऐसी बातें होती हैं, अगर वो अभिषिक्त वस्त्र किसी को मिल गया तो याद रखना मेरे प्रियो, वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है. हालेलुया. Just taking this word cloth, I will take you directly to my Lord Jesus Christ. You know, I want to tell you one thing, my beloved. Any of the preaching which comes, whether we talk about any of the great heroes of faith of the Bible or the great men of the righteous people, our message is incomplete if it is not lined with the Lord Jesus Christ. ये बहुत जरूरी है. अगर आपके संदेश में प्रभु यीशु नहीं है तो व्यर्थ है. If Lord Jesus has not been revealed through your message, it is useless. In every message of the Word of God, Christ must be revealed. Jesus must be opened and He must come in your life in full-fledged. I will take you to all, come with me in John chapter 19 and verse 23. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 23 वचन में I will take you. Just listen it carefully and underline the certain words which I'm going to tell you right now. That says that when the soldiers had crucified Jesus,
they took his clothes, underline the word, उसके वस्त्र को ले लिया। हालेलुया। जब सिपाहियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर क्रूसिफाई कर दिया तो उसके वस्त्र को ले लिया, डिवाइडिंग इनटू 4 shares, 4, underline the word, 4 shares, 4 हिस्सों में उसे बांट दिया। यानी जो वस्त्र यीशु मसीह के शरीर में था, जो क्लोक उनके शरीर पे था, जो उनके शरीर को ढांक के रखा था, उस पार्ट को उसने सिपाही ने खींच लिया और उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। Underline the 4 shares, 1 for each of them, with the undergarment remaining, यानी कि उनके जो शरीर के नग्नता को जो झांप देता है वो यीशु मसीह के शरीर में मौजूद था। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। This garment was seamless, जिसका ये अर्थ है कि जो उनका वस्त्र था उसमें जरा सा भी क्रश्ड नहीं था, उसमें कोई मुचड़ा हुआ नहीं था, वो क्रश्ड नहीं था, वो बिल्कुल साफ सुथरा और प्लेन था। वोवन इन वन पीस, यानी कि वो जो वस्त्र का जो टुकड़ा था वो एक ही संपूर्ण टुकड़े में मौजूद था। नो कट, जिसका अर्थ है कि उसमें कोई भी कैंची नहीं लगा था, ना कोई सुई लगा था। वो एक अंगरखा जो उनके शरीर को ढांक रहा था, परंतु उनके शरीर का जो वस्त्र था, जो गारमेंट था, जो रोब था, उसे सिपाही ने छीनकर उसे 4 भागों में बांट दिया। हालेलुया। Are you listening? Are you listening? Now here the question comes. अब यहां पे एक सवाल उठता है मेरे प्रियो। When Jesus was hung on the cross, he was already crucified. And what happened? What happened when he was crucified? Soldiers, they took his robe, they took his cloak, they took his garment, and what they did, they divided into 4 parts. This 4 parts I will talk to you later. Remember, keep it in mind, I will talk to you later, this 4 part of the clothes, why it was being divided. Why his cloth was taken at that time, this I will talk to you later. इस विषय में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, आज ही के इस सभा में, कि वो 4 वस्त्रों का क्या अर्थ था, क्यों उसके वस्त्र 4 किए गए और उसके वस्त्र शरीर से क्यों लिए गए। अब यहाँ पे come with me, I will take you. Remember one thing. Jesus, our Lord, when he was hung on the cross, righteousness was flowing from his body. उनके शरीर से धार्मिकता बहती थी, परंतु उनके वस्त्र में कुछ था, उनके वस्त्र में कुछ चीज छुपा था। इसी से जब सिपाहियों ने उसके वस्त्र को ले लिया तो प्रभु देख रहा है कि मेरा वस्त्र ले रहा है। प्रभु को मालूम है कि अब मेरा वस्त्र इन्हें दिया जा रहा है और उसके 4 टुकड़े किए गए। प्रभु यीशु देख रहा है कि इट इज बीन डन। आपको मालूम उसके वस्त्र से क्या चला गया? यीशु मसीह के वस्त्र से उसी वक्त क्लोथ, वो जो क्लोथ था, दैट इज कॉल्ड, all of you come with me, Isaiah 61 and verse 10. यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61 अध्याय के 10वें वचन की ओर चलेंगे, which will give you the clear picture, and then I will explain each and everything else to you, that why Joseph had left his garment, his cloak, why he left it there, and then why Jesus allowed that his cloth must be taken. Hallelujah. I will read it for you, but you will underline the certain words there. Number 1, I will greatly rejoice in the Lord. My soul should be joyful in my Lord. मैं सचमुच बहुत आनंद मनाऊंगा परमेश्वर में, क्योंकि मेरी आत्मा परमेश्वर में आनंद मनाती है। The first underline, He has clothed me with the garment of the salvation. Number 1, underline, He has clothed me. यहाँ पर यशायाह नबी बात कर रहा है और ये बता रहा है कि मैं आनंद मनाऊंगा क्योंकि उसने मुझे उस वस्त्र को पहना दिया है जो सचमुच उद्धार के वस्त्र हैं। हालेलुया। This is the first one which you will underline it. And number 2, that He has covered me. He has covered me with the robe of righteousness. This scripture says कि उसने मुझे ढांक दिया है, कवर कर दिया है। किस चीज से?
अपने उस वस्त्र से जो धार्मिकता के वस्त्र है, द रोब ऑफ राइचियसनेस, कवर, अंडरलाइन दिस वर्ड ऑल्सो, द एंटायर, कवरिंग, ढाका जाना और धार्मिकता के वस्त्र. दिस इज द सेकेंड थिंग विच यू विल कम टू नो. एंड द थर्ड एंड द फोर्थ, that as a bride decks himself with the ornaments. यहाँ पे उस ब्राइड ग्रूम के विषय में आइजाया दो बातें यहाँ पे रिवील करता है कि उस वस्त्र का जिक्र करता है कि उस वस्त्र के लिए मैं इतना आनंदित हूँ क्योंकि ये जो वस्त्र है ये वो वस्त्र है जो नंबर 1 सैल्वेशन यानी उद्धार देता है, और दूसरा ये वो वस्त्र ढाका गया है, दिया गया है झांपने के लिए जो धार्मिकता के वस्त्र हैं, और ये उसी समान है जिस तरह से दूल्हे को, ब्राइड ग्रूम के वस्त्र को के ऊपर ऑर्नामेंट के समान कार्य करता है. यानी ब्राइड ग्रूम, अगर बाइबल में ब्राइड ग्रूम के विषय में बात हो रहा है तो याद रखना जो आत्मिक रीति से हमारा दूल्हा है और परमेश्वर का वो अभिषेक जो हमारे ऊपर आके ठहरता है, उस ब्राइड ग्रूम का वस्त्र है इज लाइक अ प्रीस्टली गारमेंट. यहाँ पे उस वस्त्र के महत्व को बता रहा है कि वस्त्र के द्वारा पहला आपको मिलता है सबसे पहले सैल्वेशन, और उस वस्त्र के द्वारा आपको मिलता है धार्मिकता, क्योंकि वो एक दूल्हे का एक ऐसा सचमुच याजक का वस्त्र तैयार होता है जिसमें वो अभिषेक होता है, यानी अनॉइंटिंग ऑफ द प्रीस्ट, जिसका ये अर्थ है कि वो जो याजक का अभिषेक उस वस्त्र के द्वारा उस व्यक्ति को मिल जाता है. और दूसरी बात यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, कवर्ड विद द रोब ऑफ राइचियसनेस which says as a bride adorns herself with her jewels. यहाँ पे उस दुल्हन के बारे में बात किया जाता है कि उसका जो ये वस्त्र है, ये जो धार्मिकता का जो उसको वस्त्र मिला है वो उसके जेवर जेवरात के समान है. यानी कि यू एंड आई, My beloved, listen it very carefully. यहाँ इसका ये अर्थ है कि आप जो मसीह की दुल्हन है, you are the bride of the Lamb. आप उस मेमने की दुल्हन हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह ने, now listen it very carefully, when Jesus was hung on the cross, when he was crucified, that time what he did, when the soldiers want to take his cloth, he gave it, he allowed it, let it take, because it is important. उसको ये मालूम है कि ये मेरा वस्त्र अगर उसको मिल जाएगा तो पहला तो उसके जीवन में साल्वेशन आ जाएगा, और दूसरा the second thing, क्योंकि मेरा जो वस्त्र है is a robe of righteousness है. क्योंकि रोब ऑफ राइचियसनेस यहाँ पे क्या करता है, अब इस चीज को समझो. Soldiers were there, people were there, and Lord was giving his cloth. वो दे रहा है अपने वस्त्र को. क्यों दे रहा है? It has been said that Jesus became naked for us. Do you know the meaning of nakedness in the spiritual realms? When you are in the sin, hallelujah, hallelujah, जब आप पाप में होते हैं तो आप जब भी लोगों को देखते हैं उसकी शरीर आपको दिखाई देता है. Nakedness you can see. Any man is in the sin, in the shame, in the suffering, in the rejection. उस समय दूसरा व्यक्ति जब उसको देखता है तो उसके पाप उसको दिखाई देते हैं. That sin represent the nakedness. So Jesus wanted that now my cloth must be given to the soldiers and the people, the spectators, those who are watching me must have this cloth. Must have my cloth, because my cloth is a cloth of righteousness. क्योंकि उन लोगों को सचमुच धार्मिकता भी मिलेगा और उनको उद्धार भी मिलेगा, और जो मेरे वस्त्र उनके जब आंख के ऊपर आएंगे तो उनकी आंखें मेरे इस शरीर को ना देखेगी, वरन सचमुच उनकी आंखें धार्मिकता से भर जाएगी, वो दूसरे के पाप को ना देख पाएंगे. That is the reason Jesus did that, and I want to take you there, that is why Joseph did the same. Joseph did the same. When Potiphar's wife tried to grab her cloth, he just left because he knew. उसको ये मालूम है कि मेरे वस्त्र में कुछ है, मेरे वस्त्र के द्वारा उसके पाप ढांके जाएंगे. क्योंकि ये विश्वास करता. I tell you my beloved, in your spiritual life,
When you come to Christ Jesus, you receive the robe of the righteousness. आपको जो वो धार्मिकता के जो वस्त्र मिलते हैं, वो जो धार्मिकता का वस्त्र मिलता है, वो याद रखिए, by faith only you receive it. And there is only one righteous man. He was Jesus. So when Jesus was going to his Father, when Jesus was hung on the cross, he knew it that from my body, from the part of my body, from the covering of my body, from the cloth of my body, even the righteousness flows. क्योंकि वो धार्मिकता बहेगी, क्योंकि वो जो धार्मिकता बहेगी, वो जो robe of righteousness में, उसमें क्या होगा? हर एक मनुष्य परमेश्वर की महिमा में होंगे. They will be in the glory of God, and when they will be in the glory of God, they will never sin. वो पाप नहीं करेंगे, उनको दूसरे का पाप नहीं दिखाई देगा, क्योंकि all the time we say that Jesus became sin for us. Jesus became naked for us. Why? He was taking everyone's sin, everyone's suffering, everyone's shame. And the soldiers, they were all watching. People around there all watching. Even his own mother, his disciples were there. But you know what he was releasing? He was releasing, it is the time I must release this cloth of salvation, this robe of righteousness, because through my robe, their eyes will be protected. They will never sin. Their eyes will never see the sin of the people, because Jesus became sin. He has taken all the lies, all iniquities, all sinful nature, all lying tongue, all fornication, all sexual adultery, all sin of the world upon his body. And people were seeing and mocking at him. And what did he do? He wanted that everyone's eyes should not see the sin of the people. So he released his robe. He released his piece of cloth. He released his cloak. And that dress was really, hallelujah, I want to read it for you. Just mark this line. That dress was really the garment of salvation. Hallelujah. The garment of salvation, the robe of righteousness. What the garment of salvation will do? It was preparing the way for each and every person that they must receive salvation in Christ Jesus. And he has covered the robe of the righteous. Covering is what? Here you see this line, what it says, as I told you, Isaiah 61 and verse 10, which says, the third line, he has covered me with the robe of righteousness. When we talk about the covering, listen it to me very carefully. When we talk about the covering, that is ढाका जाना, यही तो हम जानते हैं, यही तो हमने सीखा है कि through the blood of Jesus our sin has been covered. He atoned our sin. Atonement itself is the covering, and that he was releasing. Even his cloth was carrying that power of the salvation. Even his cloth that carrying the robe of the righteousness, he was releasing to each and every body, that no one should sin. Their eyes must always see the goodness of God, never sin against a God. And that is what he was doing at that time. And his robe, his clothes were taken away, as you have learned. But I will take you one more place also, that you must learn more and more, my beloved. Come with me, all of you, as I am taking you. I told you, this cloth of righteousness, this robe of righteousness is very powerful. Very powerful. And Joseph, in his life, his cloth was very powerful. He could have taken, not a big deal, she was just a woman. He could have grabbed it, but no. He left his garment there because she was in need. So she must receive the salvation. Her sinful nature must go one day. Hallelujah. Even his cloth was also carrying the robe of the righteousness, and he really wanted that robe must be left there. And you know what happened? She only complained about Joseph to her husband. To her husband, she keep on complaining about Joseph, but her sin was hidden. Her sin did not came before her husband. Jesus always wanted to protect us, but only by faith. Listen to me. If you believe it, अगर आप विश्वास करते हैं, by your faith, then only you will receive this garment
of salvation. The garment of Jesus Christ's body, his garment carries the greatest power because his garment is soaked in the blood. It is soaked in the blood. Hallelujah. And that soaked garment is given to all the saints of the Lord. Hallelujah. To his own bride, you and I. उसकी अपनी दुल्हन जो आप और हम हैं, he is really, his cloth is being dipped in the blood, and by his blood, by his garment filled with the blood, we are all washed. Hallelujah. Then we receive the robe of the righteousness. मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है आपको एक बात समझना. In spiritual realms, when we walk, अगर आपके शरीर में, ये आप सुन लीजिए, it is spiritual realms I'm telling you. In your life, if you don't have the garment, that is the garment of the salvation and the robe of righteousness, you cannot enter the kingdom of God. You cannot partake the marriage of the Lamb of God in the heaven. You cannot do anything else. This is very important. If your life, if you're not covered, if your body is not being covered with the robe of righteousness, it is all useless. It is all waste. And I will tell you how beautifully Lord has defined about through the scripture that you must know about the robe of the righteousness. Today I will be taking you deeper into this cloth, this robe, this cloak, what Jesus was wearing it, and the power of his righteousness was flowing through his cloth, and it will really change your life. Come with me, all of you. I will be taking you further so that you must understand more and more that as I told you that his cloth was dipped in the blood. Let me take you to this place. Hallelujah. Hallelujah. Revelation 19 and 13. प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय के 13 वचन में ये लिखा है, ये these all are the scripture will make you understand that if your spiritual body is without the robe of the righteousness or without the garment of the salvation, you cannot enter in his kingdom. You cannot be his bride. You cannot be the part of the table of the feast in the heaven. So it is very important about your garment. Hallelujah. Revelation 19 and 13 says, and he was clothed with a robe dipped in the blood. Remember when Jesus was hung on the cross. याद रखना मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर लटका था. Hallelujah. He was already crucified. He was hung on the cross. And you know what happened? Truly, the cloth which was there on his body, which was covering his entire body, it was completely dipped in the blood. वो संपूर्ण रीति से उनके लहू में डूबा था. और इसी बात को यहाँ पे प्रभु का वचन यूं कहता है, and his name is called the Word of God. Glory to Jesus. Through the blood which has been dipped and which has been soaked in the body in his cloth, that cloth was itself carrying the power of the Word of God. I will reveal you. I told you to hold back. I told you in the last of the message, I will reveal it, that how his cloth, why his cloth was divided into 4 parts. And this, you mark this line, that his name is called the Word of God. This also you will receive it, that why the cloth dipped of Jesus in his blood was called the Word of God. What exactly he has given to us on the cross, so that we all must receive it, ताकि हम सब उसे पाएं और फिर पाप में ना गिरें. Hallelujah. I will take you to a beautiful story. Come with me in Genesis chapter 3. We'll be reading chapter 3 verse 7. Just mark with me something. I'm going to speak it to you right now. Chapter 3 verse 7, verse 10 and verse 11, we are going to read it right now. Then the eyes of both of them were opened. यहाँ पे वचन यूं कहता है कि दोनों की आंखें खुल गई. किन दोनों की आंखें खुल गई? Adam and Eve, आदम और हवा की आंखें खुल गई. And they knew that they were naked, और उनको ये पता चल गया कि वो वस्त्रहीन हैं. And they
they sewed a fig tree together and made themselves loin covering. और उन्होंने क्या किया कि एक फिग के पत्तों को, अंजीर के पत्तों को लेकर सी कर अपने शरीर के लिए एक लंगोट तैयार करके, मतलब they have covered their shame, their nakedness. And then come with me, Genesis 3:10, what it says. He said, this is about the Lord. He said, I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid himself. यहाँ पे Adam is telling कि मैंने ये सुना तेरी आवाज को इस बागीचे में, यानी अदन की वाटिका में मेरे प्रभु, तो मैं डर गया क्योंकि मैं तो नग्न था, मैं वस्त्रहीन था, इसी से मैं छिप गया. Hallelujah. Here I want to tell you one thing. The first verse, Genesis 3:7, what we have learned कि उन दोनों की आंखें खुल गई. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, उनकी कौन सी आंखें खुली? First thing, when Adam was created in the image of God, and you know what happened? He was naked, yes, but he could not see the nakedness. वो ना तो अपनी वस्त्रहीनता, नग्नता को देख सकता था और ना ही अपनी पत्नी हवा का देख सकता था. परंतु वो क्यों नहीं देख सकता था? यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वो उस समय क्यों नहीं देखता था. इसका कारण है क्योंकि उनके शरीर पर सचमुच वो धार्मिकता के वस्त्र, यानी द रोब ऑफ राइचियसनेस वाज गिवन फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ. परमेश्वर ने उन्हें धार्मिकता का वस्त्र पहना के रखा था और तब उनकी स्पिरिचुअल आईज, आत्मिक आंखें खुली थी. याद रखना मेरे प्रियो, अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली रहेगी तो ना आप अपना और ना किसी दूसरे का कभी उनके नग्न शरीर को नहीं देखेंगे. दिस इज एग्जैक्टली द फैक्ट. और फिर क्या होता है? Their eyes were opened. What happened? Their spiritual eyes, it became blind. They truly became blind. उनकी आत्मिक आंखें अंधी हो गई, बंद हो गई. And their worldly eyes, संसारिक आंखें जैसे खुली, उन दोनों को दिखता, अरे हम तो निर्वस्त्र हैं. Do you understand what I am telling you? They already received when Adam was created in the image of God and he was fullness in the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा में थे बेटा. They was completely in the glory of God, and in that glory there was the robe of righteousness was covered their body, and that has the power, and that same power Jesus was releasing from the cross of Calvary when he was hung. It was necessary. When the soldiers, they have taken his clothes and divided in four, Jesus wanted that. This is exactly I want it to be done. यीशु मसीह चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि जो पहला पाप आदम ने किया, they have sinned against God. The second Adam, Jesus, he has reconciled and he gave his clothes. He gave his cloth, and that cloth was carrying the garment of salvation. Hallelujah. His cloth was carrying the robe of the righteousness. If you don't have the righteousness, I'm telling you, beloved, go and grab the cloth of Jesus Christ. Go and grab it. His cloth is carrying the power of God. His cloth is having the salvation power. His cloth is having the robe of the righteousness. And this is what has happened. And that I told you in Genesis 3:10. What happened? They became spiritually blind and the robe of righteousness was gone. They have fallen in sin. Hallelujah. Hallelujah. And later on what we found it, then in Genesis 3:11, he said, who told you you were naked? Here God is telling you that Adam, तुझे किसने बता दिया कि तू नग्न है? God is asking Adam, who told you? Have you eaten from the tree which I command you not to eat? Now God is telling, कहीं ऐसा तो तूने नहीं कर दिया आदम कि मैंने तुझे मना किया था इस पेड़ के फल को तू ना खा. कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने ऐसा कर दिया है. And you know, my beloved, truly Adam had received the robe of the righteousness. His eyes were always be in the presence of the Lord. He was seeing the goodness of God in abundance. Truly he was.
उसकी आंखें कोई पाप को नहीं देख सकती थी, उसकी आंखें कोई गलत काम नहीं कर सकती थी. But the moment they disobeyed God, they sinned against God. पाप में वो ताकत है, याद रखना. Whenever you will fall in temptation and you will commit sin, I am telling you, the robe of righteousness, what you are carrying, the garment of the salvation, what you are carrying, it will go. Protect it. Protect it. Let your eyes to be open only for the spiritual things. Let your glory of God will be manifested in your life in a mighty way, that you must always and always see Lord Jesus Christ. Hallelujah. Your eyes must be focused. That is the reason. इसी से प्रभु यीशु ने उन लोगों को, उनको मालूम है कि ये लोग बहुत कमजोर हैं, क्योंकि ये लोग शरीर में हैं, ये लोग आत्मिक रूप से कमजोर हैं, मुझे इसी से अपना वस्त्र देना है. उन्होंने लेने दिया. And he became naked, which means he was not exactly naked on the cross of Calvary. He was wearing his undergarments, but he became naked for us, which means he became sin for us. He was really rejected. He was lonely. He was afflicted. He was punished. He was bruised. He suffered for us. He became sin for us. And he wanted that, my beloved, he loved all of them, and he said, Father, forgive them. And the forgiveness carries the cloth. And I want to tell you, I want to give you the one scripture. What happened? Something great has happened in the Garden of Eden. When we come to Genesis chapter 3 and verse 21, I want to read it for all of you. Come with me, all of you. Genesis chapter 3 and verse 21. Hallelujah. It will give you the clear picture of the coming of Messiah, the coming of our Lord Jesus Christ. When God saw that truly Adam and Eve have sinned, जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी संतान जो मेरे स्वरूप में बने हैं, उसकी पत्नी जो मैंने उसके देह से निकाला, जिसके साथ मैं फेलोशिप करता था, now they have committed sin against me. And because they have committed sin, the glory of God was lifted away. वो महिमा के वस्त्र चले गए. The robe of righteousness was taken away, and the garment of the salvation was taken away. Now they had to pay the price, and not they have paid the price actually. It is the Lord is willing to come. Come with me, Genesis 2 and 3 and chapter 3 and verse 21, which says, the Lord God made garments of skin for Adam and his wife, clothed them. Underline, clothed them. Hallelujah. ये वचन यूं कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने स्किन से यानी चमड़े से एक वहां पर एक जानवर का वध होता है. एक समझ जाइए कि एक मेमना आपके लिए वहां पे पहला वध होता है. एक जानवर को वहां मारा जाता है और उसके शरीर के जो चमड़े को, स्किन को, आदम और ईव को एक कवरिंग यानी वो वस्त्र पहनाया जाता है. That covering is our Jesus Christ, the atonement. That covering is the coming of the Messiah for whole of the mankind. That was decided on that particular day when Adam and Eve, they have sinned against God and they have fallen short glory of God, and the robe of the righteousness was taken away, the garment of the salvation was taken away, and then it was decided कि आज ही के दिन ये तय हो गया कि वो लहू बहाया जाएगा और यीशु मसीह का वस्त्र सचमुच हमें ढांकता है. That is the reason Jesus allowed the soldiers, you must take my robe, you must take my garment, you must take my cloak, you must take my covering of the body. And he allowed, you better take, because when you will take only through my garment, only through the blood which is soaked the garment, it will cover your sin. And that day it was decided, the atonement of Jesus Christ, that he has covered his sin by his blood, soaked, clothed, the cloth of Jesus Christ. That is the reason, as a righteous man, एक धर्मी व्यक्ति की नाई, जब यूसुफ को पता था
कि वो एक धर्मी व्यक्ति है, उसकी आंखें उस महिमा में रहती है, वो पाप को नहीं देखता था। और जब पोतीफर की पत्नी ने उसके वस्त्र को पकड़ा तो उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि इसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसका जीवन पाप में है, तभी तो वो बचाई जाएगी। और सचमुच मेरे प्रियो, कहीं पे भी इस बात का बाइबल में जिक्र नहीं आया कि पोतीफर की पत्नी का पाप उजागर हुआ। उल्टा यूसुफ ने उस पाप को अपने ऊपर लिया। The same way Jesus has done it for us when he is hung on the cross. He has done the great things. Hallelujah. As I told you, the robe of the righteousness we receive only by faith. Only by faith through his blood and through his ultimate sacrifice. परंतु कुछ लोग instead of seeking the righteousness of God, they do their own righteousness. And this is the biggest sin before God. I want to make you understand that you must learn something through the word of God, which says, and I want to take you, come with me. Hallelujah. Hallelujah. Why it is important, as I told you, मैंने आपको बताया बार बार एक बात, अगर हमारे शरीर में धार्मिकता के वस्त्र नहीं है, The robe of righteousness नहीं है, और सबसे जरूरी बात, अगर हमारे शरीर में सबसे जरूरी बात जो हम हमेशा बोलते हैं the garment of salvation नहीं है, तो याद रखना, before the eyes of God we are always naked. We are always in sin, because in sin God sees us always naked. We are always in shame. We are always in pain. We are always in suffering, which God cannot see. If we are not clothed with the cloth of righteousness, it is all in vain. And what happened? Remember, I want to quote one scripture here. 2 Corinthians chapter 5 and verse 3 says, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वां अध्याय और 3रे वचन पे उसमें ये लिखा है, because we are clothed and we will not be found naked. Hallelujah. Only this line, क्योंकि हम उस वस्त्र को पहनाए, हमारे ऊपर वो वस्त्र पहनाया गया है, और इसी से हम कभी भी उनके सामने नग्न नहीं दिखाई देंगे। कौन सी वस्त्र के विषय में यहाँ पे कह रहा है? उसी वस्त्र के विषय में जो धार्मिकता का है, जो हमारे उद्धार का है। And as I told you, the salvation and the righteousness comes through the cloth of the Jesus Christ when he was hung, and he wanted to give and he gave to all. And what we found, there's some people, they are so ignorant. कुछ लोग तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते इस बात को कि उनके जीवन में यीशु मसीह की धार्मिकता का महत्व क्या है, वो अपनी धार्मिकता में जीते हैं। And this is completely wrong. इसको आपको समझना होगा कि कहां पे प्रॉब्लम आता है। Their self-righteousness, how it produce and it gives problems in their life. Hallelujah. I will quote a scripture, 1 John 1:8. पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय और 8वें वचन में यूं लिखा है, 1 John chapter 1 and verse 8, if we see we have no sin, if we say, अगर हम ये कहते हैं कि हम में पाप नहीं है, we deceive ourselves, हम अपने आप को धोखा देते हैं, and the truth is not in us, और सत्य हमारे में नहीं है। Hallelujah. Are you understanding? Are you understanding, my beloved? The scripture says, I'm talking about this, now I'm describing here सेल्फ राइचियसनेस। कुछ लोग क्या होता है, वो अपनी धार्मिकता में जीते हैं। अपनी धार्मिकता के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो आपको बहुत जरूरी है। अगर आपके पास यीशु मसीह का धार्मिकता नहीं है, तो आपका सेल्फ राइचियसनेस विल रियली वन डे इट विल लैंड यू टू द फायर ऑफ हेल। So you have to protect yourself from your self-righteousness, which says, if we see that we have no sin, अगर हम ये कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है, रोमियो उसके 10 अध्याय के 3 वचन में, निकालिए मेरे साथ, रोमन्स उसके 10 उसके 3 अध्याय में लिखा है, 10 वचन के 3 अध्याय में, for they being ignorant to God's righteousness, ऐसे लोग जो हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता से बड़े दूर रहते हैं, उनको कोई परवाह या फिक्र नहीं होता।
going about to establish their own righteousness, वो अपनी धार्मिकता को हमेशा करने में लगे रहते हैं, have not submitted themselves into the righteousness of the God. वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर जो उनको देना चाहता है अपनी धार्मिकता, उसके सामने अपने आप को समर्पित नहीं करते. और जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो मालूम वो कैसा जीवन जीते हैं? They led by the law. वो व्यवस्था में चलना पसंद करते हैं. Are you listening to me what I am telling? Such people love to lead by the law. But when Jesus came, he was full of truth and grace, and through Christ Jesus, there is no role of law at all. There is no role of law. क्योंकि जो लोग लॉ में चलते हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने सेल्फ राइचियसनेस की तरह, अपनी स्वयं की धार्मिकता की तरह काम करेंगे. अगर वो परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो अपने हिसाब से एक योजना बनाएंगे. ये तरीका सही है, मैं इसी दिन जाऊंगा, मैं सही हूं, मेरी धार्मिकता सही है. अगर दान देने का समय आएगा तो वो हमेशा दान नहीं देंगे, वो अपनी सोच से देंगे कि आज दे देता हूं. अगर दशमांश देने का समय आएगा तो वो बोलेंगे अरे मैं क्यों देता हूं, मेरा जब दिल करेगा तो दूंगा. अगर वस्त्र पहनने का बात आएगा वो अपनी धार्मिकता में चलेंगे. They will never ask or they will never feel the need of taking the robe of the righteousness from the garment of Jesus Christ, which is soaked in the blood, hallelujah, which is meant for the bride of the Lamb, which is meant for all of us, for you and I, hallelujah. This self-righteousness is the biggest sin before the sight of God, and you must protect yourself. आपको अपने आप को बचाना है, हालेलुया. और यहाँ पे देखो रेवलेशन में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय की 15वें वचन में क्या कहता है परमेश्वर. क्यों आवश्यकता है द रोब ऑफ राइचियसनेस? Behold, I am coming like a thief. यीशु मसीह, हालेलुया, वो कहते हैं सचमुच कि मैं सचमुच एक चोर की नाई आऊंगा. जब आप लोग लीस्ट सोचेंगे, जब आप सोचेंगे नहीं कि आज प्रभु आएगा, उस दिन वो आ जाएगा. Blessed is the one who stays awake. धन्य है जो जाग रहे हैं. And keep his cloth. Underline this word cloth. जिसने अपने धार्मिकता के वस्त्र रोब ऑफ राइचियसनेस को संभाल के रखा है. क्योंकि यीशु मसीह जब चोर की नाई आएंगे किसी को पता नहीं होगा. और अगर उस मनुष्य के शरीर में धार्मिकता का वस्त्र नहीं होगा तो देखो आगे क्या होता है. हालेलुया. So that he will not walk about naked. हालेलुया. जिसका ये अर्थ है कि वो नग्न नहीं चलेगा, यानी उसके पाप ना दिखाई दें. हमारे पाप सिर्फ ढाके जाते हैं only through the blood which is soaked in his cloth and garment and it has been covered. अगर वो कवरिंग नहीं है आपके ऊपर तो आपके पाप दिखाई देंगे, और अगर कवरिंग है तो नहीं दिखाई देंगे. And men will not see his shame. जिसका ये अर्थ है कि यहां तक कि सांसारिक लोग, संसार के लोग जो आपके साथ रहते हैं, उठते हैं, वो भी आपके पाप को नहीं देख पाएंगे. क्योंकि धार्मिकता इतनी ज्यादा होगी प्रभु यीशु का, वो कवरिंग, वो महिमा इतना ज्यादा होगा. और साल्वेशन, जो गारमेंट ऑफ साल्वेशन आपको कवर किए रहेगा, आपका साल्वेशन खराब नहीं होगा, आपका साल्वेशन छूट नहीं जाएगा, आपकी धार्मिकता के वस्त्र ऐसे बचाए जाएंगे. और यही प्रभु कहता है कि जिसके शरीर में वो धार्मिकता के वस्त्र हैं. और जब मैं सचमुच चोर की नाई आऊंगा और वो जागता हुआ मुझे मिलेगा तो वो सचमुच मेरे साथ स्वर्ग को जाएगा, क्योंकि मैं लेने आऊंगा. हालेलुया. एंड लेट अस कम मूव फॉरवर्ड इन रेवलेशन 3 chapter 17 what God says about the self righteousness. जो लोग स्वयं की धार्मिकता में चलते हैं उसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है. जिसके पास प्रभु यीशु है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्वयं की धार्मिकता बनाते हैं. which says because you say I am rich. यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि तू ऐसा कहता है कि मैं तो धनवान हूं. and I have become wealthy. यानी मेरे पास बहुत ज्यादा धन दौलत हो गया है. and I have need of nothing. जिसका ये अर्थ है कि अरे मुझे यीशु लेके क्या करना, मुझे साल्वेशन लेके क्या करना, अरे मुझे ये धार्मिकता के वस्त्र लेके क्या करना. तो see what word of God says as a warning. And do you know, hallelujah, you are wretched.
तुम अभागे हो. Hallelujah. What Lord is telling, the word of God is telling, do you know you are rich? यानी तुम अभागे हो. And miserable, तुम तुच्छ हो. And poor, तुम कंगाल भी हो. Are you listening to me? This is not my word. Lord is really helping you and giving you the value and the importance of His cloth, the robe of righteousness, the garment of salvation. And lastly He said, and blind, तुम अंधे भी हो. तुम अंधे भी हो. And the last word, and naked, तुम वस्त्रहीन हो, तुम नग्न हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो धार्मिकता के वस्त्र ही नहीं है. और अगर धार्मिकता के वस्त्र नहीं है तुम्हारे जीवन में, तुम अपनी राइचियसनेस में रहते हो, तुमको घमंड है कि तेरे पास इतना धन है, तुमको घमंड है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु तुमको यीशु की आवश्यकता नहीं है, तो तुम यू आर नॉट फिट टू कम टू द किंगडम ऑफ गॉड. हालेलुया. You will not receive then your salvation, and the robe of righteousness is not upon you. Then what you will receive? Nothing you will gain. Hallelujah. और जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा कि when all have sinned and fall short glory of God, रोमन्स में लिखा है 3 अध्याय उसकी 23 वचन में कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए. क्या है वो महिमा? क्या है वो महिमा? क्या है वो महिमा? ये उसका वस्त्र है, उसका धार्मिकता का वस्त्र, उस महिमा में, उसके लहू में डूबा हुआ, और वो आपके शरीर को कवरिंग करता है. हालेलुया. अगर आप उनकी महिमा में रहेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल आईज खुली रहेगी. आप कभी न पाप को देख सकते हैं, न संसार की नग्नता को देख सकते हैं. आपका फोकस सिर्फ यीशु पे होगा, आपका फोकस उसकी क्रूस पे होगा, आपका फोकस उनके लहू पे होगा, क्योंकि आप उसकी वो दुल्हन है जो उनके लहू से धोए गए हैं. एंड सी व्हाट जीसस टॉक्स अबाउट द ब्राइड. दुल्हन के विषय में प्रभु क्या कहता है अपने वचन के बारे में. हालेलुया. This I want to read it for you, which is very beautiful scripture. And Revelation 19 verse 8 says, and to her, her यानी उनकी दुल्हन के विषय में, she was granted to clothe herself in fine linen. एक सुंदर लिनन में है, clear and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Hallelujah. वो सफेद वस्त्र जो यीशु के लहू से धुला है, वही तो हम सब संतों का वस्त्र है. यानी यीशु मसीह के वस्त्र में वो धार्मिकता है जो आपको उनकी दुल्हन बना के तैयार कर देता है, उनकी मेमना की तरह आपको तैयार करता है कि जब आप उनके सामने जाए तो he will receive you as his own bride and you are welcomed. और मेरे प्रियो, अगर आपके शरीर में उद्धार के वस्त्र नहीं हैं, आपके शरीर के ऊपर धार्मिकता के वस्त्र नहीं हैं, तो कहाँ गया आपका उद्धार और कहाँ है आपका धार्मिकता? तो कैसे आप पहुंचेंगे उस स्वर्ग में, अनंत काल के जीवन में? And as I told you, Lord wants to give you some treasure. And lastly, not the least, as I told you, this is very important. Keep it in your mind, my beloved. ये बातें आप याद रखिए कि Isaiah 61 and verse 10 will give you the clear picture. Number 1, which I told you, that the garment of salvation and the robe of righteousness. When you have the garment of salvation, which means as a bridegroom, एक दूल्हे की नाई आपका वस्त्र होगा, और वो वस्त्र याजसी वस्त्र होगा, यानी आपके ऊपर वो प्रीस्टली अनॉइंटिंग आता रहेगा, यानी जिसका ये अर्थ है कि आप हमेशा निरंतर उस राजसी अभिषेक में प्रार्थना करेंगे. और दूसरा, उनकी दुल्हन के विषय में बताता है कि वो वस्त्र उसके आभूषणों की तरह है. वो आभूषण इतना सुंदर होता है कि जिसमें सचमुच यहाँ पर उसको वो राजसी अभिषेक मिलता है. That kingly anointing which prepares the bride, you and I, to move in power, in authority in Christ Jesus. And as I told you, the last scripture which I want to give you about the 4, the cloth was divided in how many? 4. Why? This was very beautiful scripture. I said, Lord, why? The soldiers, they have taken your cloth and then divided into 4. Why? Come to me with all of you. Come to me, Isaiah
chapter 11 and verse 2, and after that I will end and to make you understand the value of it. Hallelujah. Let me read it for you. Hallelujah. This we are going to learn the fourth dimension of the piece of the cloth of Jesus Christ, which gives us the fourth spirit of God. ये बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के वस्त्र से ना सिर्फ उद्धार, ना सिर्फ धार्मिकता, वरन हमें 4 आत्माएं दी गई हैं. This fourth spirit has been given to us. I will read it for you and then I'll make you understand. The spirit of the Lord will rest upon him. Number 1, पहले परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आके ठहरेगी, which is the Holy Spirit of God. वो पवित्र आत्मा है. दूसरा, the spirit of wisdom and understanding, जिसका ये अर्थ है बुद्धि और समझ की आत्मा आपके ऊपर ठहरेगी. दूसरा और तीसरा, the spirit of counsel and power, यानी युक्ति यानी सलाह देने का जो आत्मा है और सामर्थ और पराक्रम का आत्मा आपके ऊपर ठहरेगा. और चौथी जो उनके वस्त्र के द्वारा जो हमें स्पिरिट मिलता है, जो हमें सामर्थ मिलता है, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान की आत्मा, एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. माय बिलोवेड, आई वांट टू टेल यू, when the cloth of Jesus was divided into 4 pieces, these 4 spirits were released. ये सारी आत्माएं हैं. These all are the anointing was released. Number 1, the Holy Spirit was given to us. पहला पवित्र आत्मा हमें मिला. उस पहले वस्त्र के टुकड़े के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया. दूसरा, उनका विजडम आया, अंडरस्टैंडिंग आया, यानी कि बहुतायत का जो वो आत्मा का जो अभिषेक है, ये पवित्र आत्मा के मिलने के साथ हमें वो सचमुच बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा आई. फिर उसके बाद हमारे जीवन में काउंसिल एंड पावर की आत्मा आई, यानी पवित्र आत्मा जो हमें सलाह देता है और जो सामर्थ हमें मिलता है. और चौथा हमें वो सचमुच वो हमें बुद्धि ज्ञान मिलता है और परमेश्वर का भय मिलता है. और यीशु मसीह चाहते थे कि जब ये मेरा वस्त्र इन 4 भागों में बट जाएगा तो ये चारों आत्माएं, ये चारों अभिषेक मेरे लोगों के ऊपर उतर आएगा. मेरे प्रियो, सबसे पहले जब पवित्र आत्मा आता है तो वो पहला काम करता है कि सचमुच मसीह के बुद्धि को आपके अंदर देता है. फिर आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ने आने लगता है. फिर आपके अंदर वो काउंसिल देने लगता है, वो आपको उन मार्गों पे चलाने लगता है. फिर आपको वो समझ देने लगता है, आप हर कुछ समझने लगते हैं. फिर अंत में आपको वो ज्ञान आ जाता है, बुद्धि आ जाता है, और फिर आपके अंदर परमेश्वर का भय आ जाता है. जो परमेश्वर के भय में होते हैं, those who walk in the fear of God, such children of God, such saint of God, such people, they will never sin against God. वो परमेश्वर के खिलाफ कभी पाप नहीं करते हैं. सचमुच मेरे प्रियो, आदम, अगर उसके अंदर भय होता कि अगर मैं ये फल खा के डिसओबीडियंस करूंगा, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा, तो वो ऐसा नहीं करता. परंतु उसके अंदर भय नहीं था उस समय. उसको कुछ नहीं मालूम, उसने इतना लाइट ले लिया, अरे सब कुछ तो मेरा है, ये फल भी मेरा है. इट वॉज जस्ट अ टेस्ट. और उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी. आप देखो, एंड देन व्हाट हैपेंड? एवरीथिंग वाज गॉन. ग्लोरी हैज गॉन, राइचियसनेस हैज गॉन, salvation has gone. And who had to pay the price? Then and there it was decided, the Lamb of God, Jesus Christ will come, the Son of the living God will come, and he will have to pay the price for whole of the mankind. And only through the blood of Jesus, with the cloth which has been dipped and soaked with his blood, only through the power of his cloth, the salvation and the righteousness flow. Only through the power of the divided cloth, the power of the Holy Spirit comes. Wisdom, knowledge, understanding, and the fear of God is flowing. Hallelujah. That is why the cloth of Jesus was important. That is the reason, my beloved, this is what Joseph has done. उसने अपने वस्त्र को छोड़ दिया. उसको मालूम कि इस स्त्री को आवश्यक है, जरूरी है कि सचमुच वो पाप ना करे. अगर सचमुच धार्मिकता के वस्त्र किसी के जीवन में आते हैं, उद्धार आता है, तो वो व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता.
You must learn and you must preserve योर salvation. अपने उद्धार को बचा के रखिए, अपने धार्मिकता के वस्त्र को बचा के रखिए. वही आपका एंट्री है, वही आपका पास है जो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा. और उसी वस्त्र से आप जो उनकी दुल्हन है, मेमने की जो दुल्हन है, उस जगह प्रवेश करेंगी. So that is the reason, my beloved, you must be blessed and protected through these all the verses and scripture, through the robe of the righteousness and the garment of salvation. And all these four spirits must come in your life through the beautiful, righteous, and the holy cloth of Jesus Christ. Be blessed, my beloved. Praise the Lord. God bless you in abundance. Hallelujah. And I'm going to pray for you right now. Father, in the name of Jesus, I give your sons and daughters to you right now. Each and every person, those who have heard today's message, Master, this is from your heart. That even when you were hung on the cross, righteousness was flowing from your body, and then you released your clothes. Oh, hallelujah. You gave your salvation. You gave your righteousness. You gave the Holy Spirit. You gave the wisdom, knowledge, understanding, the fear of God. Each and everything you have given to your people. I pray that today they all will receive and they will come to the closer to your cloth of righteousness and to be washed by the blood of Jesus. The way you have covered their sin, you have atoned it by your blood. I thank you, Father. Bless each and every children, each and everyone else, those who are watching us tonight, that they are going to be blessed beautifully and mightily, Father. That their life is not going to be the same. Their eyes will always see the glory of God. Never ever their eyes will witness any sin or the nakedness of the world, Master. Protect them. I seal them. I cover them with the blood of Jesus. Let all these scriptures will come alive in their life and they will see the glory of God in abundance and walk in the righteousness, and the robe of the righteousness must cover them from head to toe. In Jesus' mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Give glory to Jesus. Hallelujah.